आप इसकी पहले भी पढ़े हैं क्या? ये शास्त्र प्रमाण है सब नहीं है ना? वो भी देखिए आप। ये शास्त्र था ना? हाँ, यहाँ पे तो शास्त्र पढ़ा था। भक्ति प्रकार है। बेसिस में आप लोग इंट्रोड्यूस करिए कोर्सेस सब जगह बेसिस में मटेरियल भी। भक्ति प्रकार में भगवान आते हैं। हाँ, आप लोगों का ही है। इधर का किया मैंने। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। So you start third part of today's session. We'll be reading in this session to follow the canto 23 chapter 12th sloka onwards. We have seen how Prthu Maharaj is going to leave his body. So he is going to leave his body with the process of astanga yogis. The way astanga yogis leave the body, in that way he is going to leave his body. Because he wants to show the glory of the bhakti, greatness of devotion. Pruthu's desire to give up his body by yoga is only showing the greatness of his devotion, in which he thinks of himself as an ordinary person. So he is not Ashtanga yogi, but by the strength of the bhakti, he is able to leave the body the way Ashtanga yogis lives. Yeah. Yes. Yeah, we should practice bhakti, you'll be getting all siddhis, all the shaktis that he will be showing. So that greatness of bhakti will one will understand. Is it clear? अष्टांग योगी का सिद्धि तो बात सिद्धि तो के बाई हो रहा है। हाँ, अच्छा अष्टांग योगी जैसा टारगेट लगा के अष्टांग योग करेंगे वैसा जाएंगे। यदि ब्रह्मन में लीन होने के लिए अष्टांग योग करेंगे तो ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। यदि भक्ति युक्त माने योग में सिर्फ भक्ति माने भक्ति भी है और योग ज्यादा प्रोमिनेंट भक्ति है, तब बोले कि वो लोग परमात्मा में पहुंचने के लिए परमात्मा का लोक पहुंचने के लिए करेंगे तो परमात्मा लोक चले जाएंगे। वही वैकुंठ। जो स्ट्रांग योगी है हाँ वो एंड ऑफ जब वहां जा रहे हैं हम लोग ब्रह्म जा रहे हैं तो ब्रह्म भी कभी पूजा में जब वो पापों को हाँ उसके बाद ही जाना है वो जब बिना देखे भी जा सकते हाँ, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति ऐसे दो प्रकार। आप क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? हैं। एक स्ट्रांग योगी है हाँ वो मेडिटेट कर रहा है योग कर रहा है उसने परमात्मा के दर्शन भी उसके बाद भी और उसने ब्रह्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेस्टिनेशन सोच के वो हो गया है हाँ। तब भी जा सकता है ब्राह्मण बिना परमात्मा के दर्शन के नहीं नहीं ऐसा नहीं। अष्टांग योगी भी पहले परमात्मा का ही दर्शन करके उसको भी छोड़ के ब्रह्म में दोबारा उधर से भी मन हटा के ब्रह्म में हृदय आकाश में जो ब्रह्म है उस पर मेडिटेट करेगा, इस प्रकार जाएगा। तो परमात्मा में मेडिटेट करने एक माध्यम है, योग में नहीं परमात्मा पर मेडिटेट करना। जो परमात्मा पर मेडिटेट ही नहीं करेंगे तो निरीश्वरवादी, तो जो वो लोग तो जाएगा ही नहीं कहीं। इसमें ऐसी चीजें सुनते कि जब वो परमात्मा में मेडिटेट करता है हर लेक्चर ultimately when they are able to see Prabhasa and the beautiful form of foreign Krishna Yes. then उनका हृदय डेस्टिनेशन पहले उन्होंने भ्रमण के सोच के किया होगा बट that seeing that beautiful form वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो अच्छा, कौन बोले?
तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है। जिसको कृपा मिला तो वही परमात्मा से अट्रैक्ट होगा, नहीं तो उससे भी हटा देगा। बिना कृपा को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करना है। दर्शन करते हैं। हाँ। तो जो भी भ्रमण में जा रहे हैं वो माता के दर्शन करते ऐसे जरूरत नहीं, योग से भी जा सकते हैं, ज्ञान योग से भी जा सकते हैं, बाई कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज। तथा कुतो हो तस्य योगेन स्वदेह त्याग चिकीर्षा तो भक्ति महिम्ना स्वस्मिन् प्राकृतत्व मननात् देहपात श्रवणं तु बहिर्मुखमतोत्काताभावार्थं भगवदवताराणामिव येषां भगवद्भक्तानामिव च मायैव प्रत्यायितं भगवत्सु श्रीरामस्य भक्तेषु श्रीभवस्य देहपात अभाव एव। हैं। तो पृथु महाराज राम की जैसा और ध्रुव की जैसा देहपात अभाव। देखिए इधर बहुत कुछ ट्विस्ट है। पृथु महाराज कैसा चलेगी इसमें? पृथु महाराज का देह का पतन होना, देहपात श्रवणम तो बहिर्मुख मतोत्खात अभावार्थम भगवद अवताराणामिव अन्येषां भगवद्भक्तानां च मायैव प्रत्यायितम्। आप लोगों को पता है? क्या पता है? अब तो पूछो तब बोलेंगे, ऐसा है। एक बात पता है कि जो प्रभास खंड में बलराम जी देह छोड़ के, और उस देह को, बलराम जी का देह को चिता में जला दिया, ऐसा हम लोग सुनते हैं। पता है ना? हाँ, ऐसा नो? हाँ, इन जनरल। हाँ, तो बलराम जी का देह को जलाया गया, देह छोड़ के चले गया। कृष्ण जी को तीर लगा और उनकी अंगूठा से खून निकला, ऐसा देह को छोड़ दिया वो। ये सब सुनते हैं या नहीं? ये तब तो फिलहाल से आपका कैसा है? कृष्ण भी से देह छोड़ दिए, बलराम जी देह छोड़ दी, ये कैसे? हाँ, ब्लड आया ब्लड आने का। हाँ है, सब है, दूसरे दूसरे ग्रंथों में कई जगह है। हाँ, चिता में जला दिया, ये भी तो ये दिखा रहा है भगवान एक टेम्पररी बॉडी में। है। तो है भैया, तो इसका लॉजिक क्या है तब? ये सभी माया से क्रिएट किया माया जाल है, ऐसा आभास करा दिया माया सब। वास्तव में वो ऐसा नहीं हुआ, वो रियल नहीं है। पृथु महाराज की केस में भी उन्होंने देह छोड़ दिया योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, मैंने अष्टांग योग पद्धति में देह छोड़ दिया करके ऐसा आपको
माया के द्वारा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो पृथु महाराज की जैसा देह के साथ साथ चली गई वैकुंठ। सॉरी, ध्रुव महाराज के साथ जैसा, सॉरी, ध्रुव महाराज जैसा शरीर सशरीर चले गए, वैसा चले गए। समझ में आया या नहीं? लेकिन तब आप लोग बोलेंगे कि अरे तो अष्टांग योग विधान में भक्ति महिमा से, भक्ति की महिमा से अष्टांग योग की विधान में वो शरीर छोड़ दिया, ऐसा लोग बोल सकते हैं। ये जैसे बालाराम जी भी शरीर छोड़ के उनका चिता में उनका देह को जला दिया, वो जैसा माइक है, वैसा ये भी माइक है। मायैव प्रत्यायितम, माया के द्वारा, देखो इधर, मायैव प्रत्यायित माने माया के द्वारा ऐसा कल्पित किया गया। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ हाँ, सेम भागवत में बात है। मैंने इधर लॉजिक कैसा, अभी पूरा बाहर का लोग आपसे पूछे बलराज जी का देह जला दिया गया राम जी का, आप उसको कैसे समाधान देंगे? मैंने उसका उत्तर ये है, वो केवल माइक है, दुनिया के लिए इसे दिखाया गया, लेकिन वो तो राम जी भी, बलराम सशरीर चले गए। वैसा ही जैसा ध्रुव महाराज सशरीर चले गए, वैसे पृथु महाराज भी शरीर चले गए। हाँ, लेकिन अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने देह छोड़ दिया करके ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों किया गया? अष्टांग योग का भी स्थान देने के लिए। समझ में आया? सोसाइटी में उनको भी, माने उसका वो मत अष्टांग का भी स्थान देने के लिए। काम को छोड़ के गए, इससे भी भगवान ने अष्टांग से, अष्टांग योग का भी स्थान बच गया। बहिर्मुख मतोत्खात अभाव, तो माने उसका नहीं तो रिप्लेस ना हो जाए सिर्फ, माने वो भी टेक्निक काम करती है करके दिखाने के। समझ में आया या नहीं है? ठीक है, एक श्लोक हो गया। छिन्नान्यदीरधिगतात्मगतिर्निरीयास् तत्याजेच्छिनदिदं वयुनेन येन तावन्न योगगतिर्यतिरप्रमत्तो यावद्गदाग्रजकथा सुरतिं न कुर्यात्। When he became completely free from the conception of bodily life, Maharaj Prthu realized Lord Krishna sitting in everyone's heart as Paramatma, being thus able to get all instructions from him. He gave up all other practices of yoga and jnana. He was not even interested in the perfection of yoga and jnana systems. But he thoroughly realized that devotional service to Krishna is the ultimate goal of life, and that unless the yogis and jnanis become attracted to Krishna Katha, the illusion concerning existence can never be dispelled. तो इसमें हम लोग सुनेंगे, चिन्नान्य धीर अधिगत आत्मा गतिर, ततश्चिन्न अन्य धीर देहात्म बुद्धि यस। सो देहात्म बुद्धि नहीं है, कथम निस्पृहत्व विद्या अंगीकार तावत् प्रयोजन तदंगीकार अनंतरम च तज्ज्ञान। शुद्ध भक्ति फलम द्विविधा। शुद्ध भक्ति का फल दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट फल और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? प्रेम भक्ति। इनडायरेक्ट क्या है? ज्ञान और सिद्धियां, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और सिद्धि।
तत्र च कस्यचित् भक्तस्य स्वतः प्राप्त एव तत्र तत्र स्यात् यदि सा स्यात् तदा शुद्धः भक्तिः संकोचस्य। Okay. As long as one is too much absorbed in the bodily conception of life, he becomes interested in many different processes of self-realization, such as mystic yoga system or the system of utilizing speculative empirics. However, when one understands that the ultimate goal of life is approaching Krishna, he realizes Krishna within everyone's heart. Therefore, the main point is, having attained the stage of devotion, Maharaj Prthu became uninterested in the practices of Jnana and Yoga. Anyavilasha Sunyam. So, a real Jnana means understanding the living entity is eternal servant. This knowledge is attained after many, many births. So, Bahunam Janmanamante Jnanavan Nam Prabhat. ओके, कैसा बॉडी छोड़ेंगे आगे बोलते हैं। एवं सवीर प्रवर संयोज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ं काले तत्याजा स्वं कलेवरम्। In due course of time, when Prthu Maharaja was to give up his body, he fixed his mind firmly upon the lotus feet of Krishna and thus completely situated on the Brahmabhuta platform. He gave up the material body. How he gave up material body, we are going to see. Those who are practicing Krishna consciousness know that the examination will be held at the time of death. One is remember Krishna at the death, he is immediately transferred to Krishna Lok. And thus his life becomes successful. Prthu, by the grace of Krishna, could understand that the end of his life was near and thus became very jubilant and proceeded to completely give up his body on the Brahmabhuta stage by practicing the yogic process. It is thoroughly described in the following verses. मैंने योग की पद्धति से शरीर को कैसा छोड़ना, ये बात अभी कमिंग श्लोक में कहा गया है। वो क्यों ऐसा क्यों किया कि योग की पद्धति से, क्योंकि योग को भी स्थान मिले समाज में, इसके लिए की और कुछ नहीं। माने केवल भक्ति ही अपना स्थान पूरा स्थान ले ले तो सही नहीं है ना, इसीलिए योग के भी स्थान देने के लिए तो ऐसा होता रहता है। जैसे अजामिल के केस में भी तो उन्होंने एक नाम जप करने से पुराना पाप भी चले गया, प्रेजेंट पाप भी चलेगा, फ्यूचर में करेगा पाप भी चले गया, लेकिन फिर भी वो आगे भी वो पाप करते हुए हमको दिखते हैं। क्यों? बाकी मतों का खंडन ना हो जाए, नहीं तो स्थान गिर ना जाए सोसाइटी से, इसीलिए तो भले होली नेम लेने के बाद भी उनका फ्यूचर में पाप किया करके ऐसा दिखाया जाता है, पर वास्तव में पाप है नहीं। अजामिल के केस में माने दूसरों की मत, दूसरे मत माने दूसरे साधन, कर्म ज्ञान योग इत्यादि। हाँ, जैसे हम तो जो सौभाग्य लेक्चर सुने या हम भी जाते मीटिंग खंडन करते हैं कि और जो हमारे जो भक्ति योग का प्रोसेस है दैट इज सुपीरियर अदर ज्ञान योग अष्टांग योग, तो क्या वो हम सही कर रहे हैं उस तरीके से? हाँ वो तो सही है, लेकिन देखिए अजामिल केस में वो नामकरण के समय एक बार नाम लिया, नारायण करके बोला, बोले तो तुरंत समस्त पाप नष्ट हो गए। समस्त पाप नष्ट हो गया तो वो अभी नेक्स्ट मिनट से और दारू पीना और वैश्य से संपर्क करना ये सब बंद कर दिया, तो लोगों को कैसा लगता है, ओ और बाप रे, तो होली नेम ऐसा करते हैं करके होली नेम के चमत्कारों से वो लोग चकित हो जाते। तो क्या होगा, तो बाकी सब कुछ कर्म ये सब धंधा सब कुछ छोड़ के कर्म करना है सब, केवल भक्ति को अलग अलग करे तरीकों में यूज करने के लिए प्रयास करें। भक्ति तुरंत तुरंत अपना शक्ति को दिखा दिया, छुपा के ना छुपा के दिखा दिया, तो अजामिल केस में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो क्या होता था, बाकी का स्थान नहीं मिलता, सब लोग कुछ भी चाहे तो बस
हरिनाम ले लो, हरिनाम ले लो। तो हरिनाम का हालत क्या होता है? किसी को गाड़ी चाहिए तो हरिनाम, घोड़ा चाहिए तो हरिनाम, खेती नहीं करूंगा हरिनाम हरिनाम हरिनाम। इसको चीप ऐसा बनाएंगे जैसे भक्ति महारानी को नौकरानी से भी नीचे गिरा दें, ऐसे ही हो जाएगा, इतना भयानक हो जाएगा। बाकी का मत का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए भक्ति क्या करती है, इसलिए पावरफुल व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आप को छिपा के रखते हैं, जिससे बाकी का भी वैल्यू रहे। वेरी गुड, है ना? तो इसीलिए भक्ति महारानी आउट ऑफ for giving, for the sake of giving the place to other methods also, she hides her affect to not to show immediately. लेकिन आपका बात क्या है, प्रचार करके भक्त बना, इसमें तो कोई समस्या नहीं, बोलना ही है, क्योंकि वो तो चमत्कार नहीं है ना। हाँ, यस, चमत्कार से नहीं करना है। भक्ति महारानी अपना पूरा शक्ति को दिखाएगा 1 मिनट में, ऐसा हमारा बॉडी में ट्रांसलेट होना दिखने शुरू हो गया, क्योंकि हरिनाम करते तो ट्रांसलेट होता है या नहीं? गुरु का बॉडी ट्रांसलेट होता है या नहीं? शुद्ध भक्त का बॉडी ट्रांसलेट होता है या नहीं? अभी कोई भी रोग होता है क्या? होता ही नहीं। तो वो सभी ऐसा एकदम सुंदर और सिद्ध देह दिखना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो कैसा लगता है? हाँ, चमत्कार बहुत हो रहे हैं करके सब लोग बाकी सब छोड़ देंगे, चमत्कारों से प्रभावित हो गए। हाँ, हाँ, यस, भक्ति तो निगूढ़ है, फिलॉसफी से समझना चाहिए, सुन के समझना चाहिए, चमत्कार से नहीं। इसे क्या बोलते, चमत्कार का नमस्कार नमस्कार। हैं? चमत्कार लोग चमत्कार के लिए नमस्कार करते हैं, वो भक्ति महारानी नहीं करना चाहते। हाँ, सिद्धियों तो वो तो ताता अलग, वो तो सिद्धियां वही काम करते हैं, फिर भी उनका स्थान नहीं मिलते, क्योंकि उसको पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसीलिए बहुत लोग, 90% लोग कहाँ जाते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते, अष्टांग योग करने के लिए। कलयुग में भी डिवोटी ज्यादा है, नहीं तो अष्टांग योगी ज्यादा। अष्टांग योगी ही करने वाले सब लोग कुछ ना कुछ प्रयास करते, थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर ऊपर उठो करके। लेकिन 2 सेंटीमीटर मोटा होते बैठ बैठ हॉरिजॉन्टली पे ले गए ऊपर से। समझ में आया भक्ति महारानी क्यों? मैंने प्रहलाद महाराज की, सॉरी, ध्रुव महाराज की, पृथु महाराज की केस में अष्टांग योग के द्वारा शरीर छोड़ने के कारण क्या है? दूसरों की मतों का, हाँ, ऐसा वो भक्ति से ऐसा ऐसा ठक करके चले जाते थे वो, क्योंकि वैसे दे हैं उनको तो। लेकिन वैसे जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगी, चमत्कार का नमस्कार करके बाकी को नमस्कार कर देते हैं, बस जाओ हम भी यही कही जाए, तब उसको स्थान नहीं मिलेगा। जीरो। भक्ति में आने का, भक्ति में, भक्ति में जब शुरू करते हैं तब जाके अपराध पहले पीछे से पहले आप कौन बोले? थोड़ी देर से I'm asking about like when we are doing some people outside of the group, people innocently when we ask them कि आप ये कब खड़े करके बोलिए सर,
अरे भाई साहब, 10 अपराध कितना पावरफुल पता है? तो क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कोई भी बेकार है बोल दिए तो हो गया ना अपराध। कौन सा अपराध हुआ? फोर्थ, शास्त्र निंदन टुवर्ड्स द होली नेम। ये वैदिक कल्चर एकदम फालतू लोग, ये सब हो गए अपराध। होली नेम के प्रति होता है अपराध। ऐसा ऐसा कैसा बोलेंगे आप? वो लोग इतना ऐसा कुछ भी नहीं है करेंगे। कौन सा इनोसेंसी है उन लोगों का? तुकाराम जी जो थे, क्या? उनकी सेंचुरी में संत तुकाराम थे, हाँ, डायरेक्ट चले गए। तो उस केस में नहीं आते थे, तो आप लोग कंसेप्ट बता रहे थे कि हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ध्रुव महाराज भी ऐसे चले गए हैं, संतों का ऐसा भी होना चाहिए एक रात। नहीं तो विश्वास बनेगा ही नहीं, है ना? अरे तो बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर होता है, देह ऐसे चले जाते, कहाँ है भाई? देखो ध्रुव महाराज, देखो संत, ऐसा ऐसा भी एक एक जनरली नहीं दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ऐसा होना चाहिए। वो कौन डिसाइड करेंगे? वो भक्ति महाराज डिसाइड करेंगे, हम नहीं। ठीक है? कब उन्होंने अपना ग्लोरी को छिपा के रखना है, कब अपना दिखाना है, वो कौन करेंगे? भक्ति महाराज। जैसे हमारा नरोत्तम दास ठाकुर जी, देह ऐसे दूध होकर, हाँ, तो तब क्या है? ये भक्ति का ग्लोरी है, ऐसा होता है। तो ये सब हमारा हाथ में नहीं। आपको समझना चाहिए कि ऐसा हुआ तो भक्ति अपना दिखाना चाहती ग्लोरी, ऐसा हुआ तो भक्ति महारानी नहीं दिखाना चाहती, दूसरों को स्थान देने के लिए। ऐसा व्याख्या करने के आगे बढ़ना है। कहा है? एवं सवीर प्रवरा संयोज्यात्मानमात्म, हो गए। नेक्स्ट, संपीड्य पायु पूर्ष्णिभ्यां वायु मुत्सारयन् च नाभ्यां कोष्ठे श्वास्थाप्य मृदुकण्ठशीर्षिणि मृदुकण्ठशीर्षिणि। When Maharaj Prthu practiced the particular yogis sitting posture, he blocked the door of his anus with his ankle. इसको ले जाके उधर फिक्स कर देते हैं ऐसा, हवा क्योंकि नीचे ना जाए। हाँ, press his right and left calves and gradually raised his life upward, माने मूलाधार टू स्वादिष्ठान, है ना? Upward, passing it to onto the surface of his navel, from navel to here. This, yeah, from here to here, just from here to here, from here to here, and after that, Sahasrara. Yeah, these are the different. So ये हम लोग देख चुके हैं द्वितीय स्कंद में भी, वहीं पढ़ा है वो भी, है ना? Yes. Passing it on the surface of his navel up to his heart and throat, and finally pushed upward the central position between two eyebrows. इधर आ गया। From this discussion in this verse, it appears that Maharaj Prthu had no desire to promote himself to the higher planets. He wanted to return to home immediately, back to God. ऐसा नहीं क्रम मुक्ति में नहीं गए, इससे इधर से क्रम मुक्ति में भी जा सकते हैं या नहीं? या लेकिन वो क्रम मुक्ति में नहीं गए, बल्कि डायरेक्टली चले गए। लेकिन ये भी पूरा क्या है? माइक है। इन वास्तव में कैसे चले गए? डायरेक्टली चले गए। समझ में आ रहा है या नहीं? ये हमको माया दिखा रही है। जैसे बलराम जी की देह छोड़ के चले गए और उसको जलाया गया है, सब जैसा भ्रामिक माइक है, वैसे ये भी माइक है, वास्तव में नहीं हुआ ये। यही 11th, मायेव प्रत्यायितम।
भगवत्सु श्रीरामासु. So although Maharaj Prthu stopped all practice of mystic yoga after realizing Krishna consciousness, he took the advantage of his previous practice and immediately placed himself on the Brahmaputra platform in order to accelerate his return to Godhead. So the aim of the practicing this particular system, asana known as the sitting posture for liberation, Muktasana, is to attain the Kundalini chakra and gradually rise from Mooladhara chakra to the Swadhisthana. That means this is novel. Then from there to is to attain success in Kundalini chakra and gradually raise to the Mooladhara chakra to the Swadhisthana chakra. Then to the Manipura. Manipura means this. No. Chest is Anahata. Chest is this is Anahata. This is this is the Manipura. This is Anahata. Then this is Vishuddha. Throat. Throat is Vishuddha. Then Agna chakra. This is Agna chakra. Then this is Sahasrara. This is Brahmarandra. Like that, life air is pulled up. The conclusion is that one has to come to the Brahmabhuta stage for going back to Godhead. However, those who are Krishna consciousness or who are practicing Bhakti Yoga, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaran, Pase, can return to Godhead without even practicing the Muktasana process. Though we don't need of this process actually for devotees. Because those who are in the pure devotional platform, they are already in the Brahmabhuta stage. Because the Sarvopadi Vinirmukta, they are beyond the all the upadis. माम च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवसा गुणान समतीत्ये इत ब्रह्मभूय कल्पते. Prabhupada, what is mentioning here, one cannot be promoted to the spiritual state. As stated in the Bhagavad Gita, the Bhakti yogi, practicing Bhakti yogi is always situated in the Brahmabhuta stage. If a devotee is able to continue the Brahmabhuta platform, he enters the spiritual life automatically after death or returns to God. तो माने ज्ञान योग प्रैक्टिस करने वाले भी भक्ति की हेल्प से ही तो ब्रह्म में जाकर लीन होते हैं. माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन मीन्स देयर इज फ्री फ्रॉम द ज्ञान आल्सो. दिस श्लोक एक्चुअली लेफ्ट साइड वाला श्लोक. इधर क्या करते थे, कर्म छोड़ दिए अभ्यास प्रैक्टिस करने वाले. इधर जब ऑलमोस्ट ऑल इधर रीच करते हो ज्ञान को भी छोड़ देते, तब क्या बचेगा उनके पास? केवल थोड़ा स्वल्प भक्ति जो किया वो पहले इस टाइम में वो भक्ति मात्र रहेगा उनके पास. उसके माध्यम से जीवात्मा ब्रह्मोन में जाके लीन हो जाती है. इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मभूता स्टेज में रहना चाहिए. ज्ञान और भक्ति ज्ञान और कर्म सब छोड़ देना माने कौन सा स्टेज है वो? समझ में आ रहे हैं? इधर आते ही क्या हो गया, तो ज्ञान को भी छोड़े ना. इधर कौन क्या छोड़ा? इधर से इधर आए मैंने क्या छोड़ दिया वो? तो इधर लास्ट होने फाइनल पहुंचने के लिए थोड़ा सा ही बचा है, तो उस समय क्या छोड़ देंगे? ज्ञान को भी छोड़ देंगे. तब तो क्या है, कौन सा स्टेज में है वो? ब्रह्मभूत. क्योंकि ब्रह्मभूत स्टेज में सब छोड़ देना है, निर्गुण स्थिति है. कर्म और ज्ञान ये काम भक्त कब छोड़ देते हैं? इधर ही छोड़ देते. ज्ञान कर्मा ध्यानावृत्ति माने कर्म और ज्ञान के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं. इन्होंने ज्ञान के प्रति पहले कर्म के प्रति श्रद्धा छोड़ देते हैं, इसमें पास होते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ते इतना आसान से. ज्ञान माने कोई ब्रह्मभूत ज्ञान, मैं त्वम पदार्थ तत्पदार्थ ऐक्य ज्ञान, और उसको भी छोड़ देना है तभी जाकर वो. इसीलिए जो शुद्ध भक्ति में है वो ऑटोमेटिकली कौन सा प्लेटफॉर्म में है? ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म. वो बिगिनिंग से ही. ब्रह्मभूत माने नैष्कर्मता, दैट मीन्स निष्क्रियता. तो सत्वगुण का जो है ना वो नहीं.
वो तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म, सात्विक ज्ञान, सत्वा संजायते ज्ञान। हाँ। कौन? हाँ। इफे डिवोटी, हाँ। कौन सा लाइन बोलिए जल्दी। ये श्लोक है ना? हाँ बोलिए। हाँ। चक्रा का चक्रा, ये वैकुंठा है कृष्ण भगवान, ये श्लोक। Agna Agna chakra between the two eyebrows, and he is able to penetrate the Brahmarantara, that is Sahasrara, or to the whole of the in his skull, and go to any planet he desires, up to spiritual kingdom of Vaikuntha Krishna. So कहानी का तात्पर्य क्या है? इधर छोड़ने के बाद यदि वो आसक्ति नहीं है, इंक्विजिटनेस रखेंगे, तो वो पहले वैश्वानर लोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, उसके ऊपर उसके बाद जनलोक तपोलोक सब जाके ब्रह्मलोक में भी जाके उसके ब्रह्मांड का लेयर्स को क्रॉस करके उसके बाद तो वो वैकुंठ तक जा सकते हैं, स्वालोक की मुक्ति प्राप्त करने के लिए। नहीं तो वो टारगेट ब्रह्म में लीन होते तो वो कारणानुसार विष्णु की एफल्जेंस में घुस जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा माने भक्ति मिश्र योग, योग मिश्र भक्ति किया, भक्ति प्रोमिनेंट है, योग थोड़ा ही, अभी योग से शरीर छोड़ रहे हैं, तब तो वो तो सालों की मुक्ति में चले जाए, मिश्र योग से, योग मिश्र भक्ति से। अभी बोलिए। तभी जाके सालों की कृष्ण लोग नहीं जाते हैं, वैसे वैकुंठ जाते हैं। आपका लिविंग ज्ञान में देख सकता हूँ, तो उधर पे पहुंच गया, ज्ञान त्याग गया, उसके बाद उसी को बोलते ब्रह्म समाधि। यस, दैट इज ब्रह्मभूत ब्रह्म समाधि, इन्होंने ब्रह्म leaving all the upadhis, baba. Jnana is also coming from of sattva. If he have the, some kind of attachment for that, means he is still in the modes only, it's not brahma bhuta stage. Is it clear for everyone? समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसे लग रहा है कि बहुत वो लोगों की तो क्या करें, वो लोग रहे क्या? उत्सर्पयंस्तुतं मूर्ति क्रमेणावेश्य निःस्पृहा वायुं वायोक्षितो कायं तेजस्तेजस्तुल्यं। In this way, Prthu Maharaj gradually raised his air of life up to the hole in his skull, whereupon he lost all desires for material existence. Gradually, he merged his air of life within the totality of air, his body with the totality of earth, and the fire within the body and within the totality of the fire. माने वो तो क्या हो गया अभी इधर तक, इसके पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये तो, लेकिन कहाँ तक आया? तो वायु को नाभि, नाभि से कोष, कोष से कंठ, कंठ शीर्ष इधर तक लेके आया। इधर ले आके जो इधर देखिए, इधर एक पद्धति में क्या होने, सटल बॉडी को इधर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कहां छोड़ सकते हैं, ब्रह्मांड को क्रॉस करके भी छोड़ सकते हैं। सद्य मुक्ति में क्या होता है, इधर छोड़ देते हैं, लीन कर देते हैं, लीन कर देना है। और क्रम मुक्ति में क्या होता है, सटल बॉडी को लेके चलेंगे, अलग अलग लोकों में सभी देखेंगे। जब ब्रह्मांड का लेयर्स को क्रॉस करेंगे, सटल बॉडी में पहले जो भी है सो सेंसेस है, सटल बॉडी में सेंसेस भी रहता है, सेंसेस सभी ड्रॉप हो जाता है।
जब 5 लेयर क्रॉस करने के बाद। कौन है 5 लेयर? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। उसके बाद सटल बॉडी का जो इंटेलिजेंस, माइंड, ये सभी है, वो सभी ईगो में खत्म। ईगो क्रॉस करती, ईगो, ईगो से आता है ना माइंड इंटेलिजेंस भी। वो ईगो क्रॉस कर दिया माने माइंड इंटेलिजेंस, ईगो सब खत्म। अभी क्या बचा है उनके पास? केवल खो सोल नहीं। ईगो क्रॉस कर महत है ना, महत माने चित्त। चित्त है, चित्त महत का ही थोड़ा सा एलिमेंट क्या बोलते, चित्त बोलते। वो भी कैंसिल हो जाती है कहा? महत में। महत क्रॉस कर दिया माने चित्त भी खत्म, और तब क्या बचा? तब प्योर जीवात्मा। वो जीवात्मा जाए कहाँ मिल जाएगा? ब्रह्म। ब्रह्म में लीन हो जाती है। लेकिन अभी इधर शरीर में रहते हुए कैसा छोड़ना है? माने एक कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए। सभी सब में लीन हो जाना है करके। ये कैसा? वो ब्रह्मांड में लेयर्स में जो होने वाला चीज इधर ही आप योगी कॉन्शियसली कर देते हैं। उनका जो जो इंद्रिय है, उसकी जो कारण है, इंद्रियों के कारण कौन है? बोलिए भैया, इंद्रियों के कारण कौन है? हाँ, इंद्रियों कहाँ से आता है? ईगो ईगो में तमाम होगा डिवाइड। युगो आता है राशि का अहंकार से। कितना बार बोले, मर्च भूल जाते हैं आपको। राशि का अहंकार से आता है ना इंद्रिया। कहता हूँ बोलूं बाबा, इंद्रिया कहाँ से आता है? राशि अहंकार से। और पंच तन्मात्रा तामसिक अहंकार से। पंचमहाभूत तामसिक अहंकार। मन तात्विक अहंकार। ये याद नहीं रहता, आप लोग भूल जाते हैं। टफ लगते हैं, वही पढ़ा है ये सब। अभी ये योगी बैठ के ऐसे सभी उसमें लीन करा देते हैं कॉन्शियस। तब वो सब छूट जाता है। चले कैसा लीन कराते देखिए आप। लीन कैसा कराते देखिए। In this, Prthu Maharaja gradually raised his right hand upward. In this way, according to different positions, Prthu Maharaja merged holes of senses with the sky. His body liquids such as blood and various secretions with the totality of water, and he merged earth in with the water, and then water in fire, and fire with air, air with the sky, and so on. Next we पढ़ेंगे। So he amalgamated the mind with the senses and senses with the sense objects according to their respective positions, and he also amalgamated the so material ego with the total material energy Mahat Tattva. Again, mind with senses and the senses with sense objects according to their respective positions, and he also amalgamated the material ego with the total material energy महातत्व। माने जो उनका कारण है उनमें लीन होने करके भावना करके वो अपने से छुटकारा पा लिया, अपना सटल बॉडी का भी छुटकारा पा लिया। माने ये कैसे तरीका ये है, वो अपना कारण में लीन हो जा रहे, मेरे लिए कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार की भावना से क्या होगा, वो छूट जाएगा। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादीनां भूतादीनाम् उन्मित्कृष्य महत्यात्मनि संदधि। सद्यो मुक्ति तो समझ में आ गए ना? एक एक ड्रॉप होते चले गए या नहीं? लेयर्स क्रॉस करते, वो तो फिजिकली हुआ। इधर क्या करते हैं?
हाँ, कर्म मुक्ति में तो फिजिकली एक एक ड्रॉप होते गए। सद्यो मुक्ति में इधर ही सब कुछ चेतना से ऐसा भावना करके सब अपना अपना में लीन हो रहे हैं करके भावना से इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों को छोड़ पाते हैं। तम सर्वगुण विन्यासम जीवे मायामये न्यदा तम चानुशयमात्मस्थम असावनुषयी पुमान् ज्ञान वैराग्य वीरेण स्वरूपस्थो जहत् प्रभु जातु। Prthu Maharaj then offer the total designation of the living entity unto the supreme controller of illusory energy, being relieved from all the designations by which the living entity became entrapped. He became free by knowledge and renunciation and by the spiritual force of his devotional service. In this way, being situated in his original and continued constitutional position of Krishna consciousness, he gave up this body as Prabhu or controller of the senses. छोड़ दिए शरीर को। चलो नेक्स्ट। अर्चिना महाराज्ञी तत्पत्न्यानुगतावनम् सुकुमार्या तदार्हश्च यत्पादभ्यां स्पर्शनं भुवः। पृथु महाराज का शरीर छोड़ना केवल माइक है और वो योग के द्वारा नहीं छोड़ दिया करके कहा गया। वो कैसा है तो वो सद्यो मुक्ति जैसा होता है। उसमें केवल सेकंड कैंटा में केवल सत्य मुक्ति हो गया बोला गया, लेकिन कैसे नहीं बोला गया वो इधर एक्सप्लेन किया गया। यानी किस कॉन्शियसनेस से योगी अपना सूक्ष्म और स्थूल देह को छोड़ते हैं, ये अपना अपना कारण में लीन हो गया करके इस भावना से तो सूक्ष्म और स्थूल देह को छोड़ देते। ठीक है, इतना तो याद रखिए बस, और डिटेल से तो आप उधर देखे तो समझ में आए। तो दोनों योगी हाँ योगी करते हैं ना, तो नहीं अष्टांग योगी कर पाएगा, कर्म योगी नहीं कर। दोनों मुक्ति अष्टांग योगी करेगा। ज्ञान योगी अष्टांग योग करेगा तो इसी के तरीका में ज्ञान योगी अष्टांग योग करेगा तो इसी प्रकार छोड़ देगा, नहीं तो हाँ, नहीं तो कभी अनेक प्रकार का छोड़ते हैं। नहीं तो वो ऐसे शरीर छोड़ देते हैं, सब जगह ब्रह्म ही देख के ब्रह्म में ऐसे चेतना लीन हो जाती है। और नहीं तो अष्टांग योग के द्वारा सत्य मुक्ति से नहीं तो ब्रह्म मुक्ति से भी छोड़ते इस प्रकार। अर्चित नाम महाराज्ञी तत्पत्नी गता वनम। तकहीन उसके बाद का बात क्या है, तो ये छोड़ना दिखाएगा। तब देव तो सामने पड़ा है ना, ये सामने पड़ा है। इस देव को ले जाके माता क्या करती है, अर्ची पहाड़ के ऊपर ले जाके उधर जला देती। ये सभी क्या है, इल्यूजन। The queen of wife, Prthu Maharaj, whose name was Arci, followed her husband into the forest. Since she was queen, her body was very delicate. Although she didn't deserve to live in the forest, she voluntarily touched her lotus feet to the ground. मैंने बहुत महारानी है, लेकिन वो भी सब कुछ छोड़ के चप्पल विप्पल भी छोड़ देते, पता है ना वनवास में ऐसे बेर फीट में चली गई चली। Because Prthu Maharaj's wife as was the king and also daughter of a king, she never experienced walking on the ground. Her queens used to never come out of the palace. They certainly never went to the forest and tolerated all the difficulties of living in the wilderness. उधर बड़ा बड़ा शेर है, बाघ है, सांप है, कांटे हैं, पत्थर। वान वानप्रस्थ माने कितना रॉयल जीवन है गृहस्थ लाइफ में। वानप्रस्थ में सब छोड़ के चले जाते हैं।
In Vedic civilization, there are hundreds of similar examples of such a renunciation, the part of kings and dedication to the husband. He sati hai, sati sadhvi. Sadhvi माने husband को 100% follow कर. The goddess of fortune, Mother Sita followed her husband Ramchandra when he went to the forest. Lord Ramchandra went to the forest in compliance with the order of his father, Maharaj Dasharatha. But Mother Sita was not so ordered. Nevertheless, she voluntarily accepted the path of her husband. Similarly, Gandhari, in the case of the trust. In the case of Prthu, Arci also. So these were ideal chaste women. Such a queens also instructed in general people by showing them how to become a chaste wife and follow the husband in every stage of life. ये दिखाना चाहिए. हमारा माताओं को क्या दिखाना है? Chaste. In her stage, how to follow husband. ये छोड़ के ये छोड़ के गुरु बन सकते हैं सब. भक्ति के बल पर कोई भी कुछ भी बन सकता है, इसमें तो कोई मना नहीं. लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है क्या? ये एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है. आजकल समाज के लिए कौन सा एग्जाम्पल जरूरी? When the husband is king, she sits beside him as in the queen. And when he goes to the forest, she also follows despite having to tolerate all kinds of difficulties. ऐसा नहीं कि आप अभी कष्टों में जा रहे थे, हम नहीं आएंगे, हम इधर ही रहेंगे, मेरे पुत्रों के साथ रहूंगा, ऐसा नहीं. वो भी चाहिए. Therefore, it is said here, Atat Araham, that although she didn't want to touch her feet to the ground, she nonetheless accepted all difficulties when she went to the forest with her. So telling about setting today, so divorce is करता है. We don't want any small problem. नहीं, फास्ट नहीं देने, कम से कम बाकी का साथ तो दे दो. ये भी नहीं है ना आजकल औरतों में, लड़कियों में चेस्टिटी फेथफुलनेस सिखाना चाहिए. वो कहाँ से सीखेंगे? सामने वाला करेंगे तो वो लोग करेंगे. सामने वाले धिक्कार कर रहे हैं, मैंने अपना अथॉरिटीज को धिक्कार करना. पति को धिक्कार करना मैंने अथॉरिटी को धिक्कार करना स्त्री के लिए. तो तब कैसा है ये सब? धिक्कार करके हम इंडिपेंडेंट वुमन बन जाऊंगा, ये तो नहीं है ना शास्त्र में. कर्दम मुनि की मैंने देववती माता तो रह गई ना, ऐसे नहीं मैं भी आता हूँ, मैं तो जो बोले वो सुनेंगे नहीं. तो वो तो ब्राह्मण है, तो इसलिए ब्राह्मणों के केस में वो संन्यास ले सकते, वाइफ को भी छोड़ सकते. क्षत्रिय के केस में संन्यास नहीं है, साथ में गए हैं इसीलिए. अतीव भर्तुर धर्म निष्ठया शुश्रूषया चारदेव यात्रया नान्विन्दता तुम परिकर्षिता किसा प्रेयस्करस्पर्शनमानविन्दति. Although she was not accustomed to such difficulties in her, she followed her husband in the regulated principles of living in the forest like great sages. She lay down on the ground and ate only fruits, flowers, and leaves, and because she was not fit for this activity, she became frail and thin. Yet because of the pleasure of she deserved in serving her husband, she didn't feel any difficulties. यही प्रेम होता है, पति के प्रति इतना निष्ठा. पति माने गुरु है स्त्री के लिए. ये भागवत ये सभी क्यों बोलना है? तो सब स्किप करके बस हो गया, पृथु महाराज चले गए थे, एंड अप करते थे. लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी सब क्यों कहा? टू टीच एन एग्जाम्पल. देखिए, the word bahur varta dharma nishtha indicate that woman's duty, a religious principle, is to serve her husband in all conditions. सावित्री, जानते हैं आप लोग सावित्री, मदर सावित्री? हाँ हाँ हाँ, all there are very chaste women. Satya Anasuya, so Draupadi,
In Vedic civilization, a man is taught from the beginning of life to become a brahmachari, then an ideal grihastha and vanapastha, then sannyasi. And the wife is taught just to follow her husband strictly in all conditions of life. पर माताओं का सन्यासी जरूरी है क्या? पति को छोड़ देता हूं मैं सन्यास लेके जा रहा हूं, कहां से आया? प्रभुपाद पर्पस पढ़ रहे हैं या नहीं? Is it not that Ugra karma in Bhakti? So it is whimsical and not shastric. कर्मा भक्ति ये क्या भैया? आप नया फिलॉसफी लेके आए. I think told that it's not shastric. It's like concoction. हाँ, इसे कंगाल सर उग्र कर्म इन भक्ति होगा वही वर्ष ही भक्ति और उग्र कर्म कैसे होता है? whimsical बोल बस हो गया. The wife is taught just to follow the husband strictly in all conditions of life. Then all the 50% of problems of society will be solved. Really? Prabhupada writes in some way. If divorce are happening, who is the cause? Prabhupada writes. You remember this? Divorce woman. Actually, type kari to aa jayega. Woman is cause for divorces. Prabhupada writes. Divorce, woman. Huh? Yeah. Vaishnava culture, Vedic culture, Vaishnava culture is also Vedic culture. Yes, yes. The Brahman can go till sannyas. And Shakti can go till Maharaj. And for the rest, Why should be one person? Shudra, no. No prastha. Only grihastha. After the period of brahmacharya, a man accepts a householder's life, and then the woman also is also taught by her parents to be chaste wife. Then, thus, when a girl and boy are united, both are trained for a life dedicated to higher purpose. The boy is trained to execute his duty in accordance with the higher purpose of life. ज्ञान योग नहीं तो भक्ति योग जो भी है, उनकी जो पिता माता है जो सिखाएंगे उसके लिए हायर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए बॉय को ट्रेन करते हैं, और गर्ल क्या करेगी? उनको फॉलो करती है. गर्ल इज ट्रेन टू फॉलो हिम, दैट्स ऑल, टू फॉलो हिम. स्त्री स्वातंत्र्यम ना रहा, नो इंडिपेंडेंस. कोई अपोजिशन है तो अभी बोलिए. ये कौन बोलेंगे? ये मनुसंहिता में भी. but if instead of having a wife, the male becomes chaste, then also this. There is no chastity for male, no. Male can have many wives as per his capacity. Only female should follow male, not that the male should follow female. This is the egalitarianism. 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 Egalitarianism जानते हैं ना? Equality. We are all equal. No, no. Bhakti. What our husband does, she should follow. अगर वो नहीं है, जैसे हस्बैंड ड्यूटी नॉन ड्यूटी है, अगेंस्ट है, तो फिर उसको अपने हस्बैंड को सर्व करना चाहिए. Externally, she should serve him, but internally, she should practice bhakti. She cannot leave service to him. In one case, one lady was the initiative. अरे ये सब नया अभी आया है, तो हम लोग आधा सोल्यूशन लेके आधा छोड़ दिए. प्रभुपाद बोले हैं कि आप सब लोगों को वर्णाश्रम एजुकेशन से ट्रेनिंग करो, प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं. प्रभुपाद जो सोल्यूशन दिया आधा ही लिया हम लोग.
आपको समझ में आया आपका प्रश्न? कोई इनिशिएटेड है तो पति मार रहे हैं पीट रहे हैं तो वो क्या करता है? Different question. Well, the lady was to be initiated, and because her husband was not very. At the time of initiation, just by seeing the spiritual master told, just by seeing that, you eat for your husband, just by seeing told. And she said, yes, but how do you know I didn't told anything? I said, I don't know anything, I'm sorry, that is not that I can. So they took me for this. That is what no one told Maharaj, just told Maharaj, sir, I can be. That is all. वो इंडिविजुअल गुरु है, वो सिचुएशन है, हिदायत नहीं दे देता है। ठीक है, मेरा ओपिनियन बोलेंगे तो बिल्कुल, because whatever sin happens by her, it will go to her husband only. It will never come to her. Because she is ready to take the initiation, friend. She is not eating, nah. Cooking for him and it will go to him only. Because whatever the sin is done, so because she is loyally, faithfully following her husband, that's all. Everything goes to his account. She is pure. For the sake of everybody, that purpose also sometimes you can stay home. But individually we can give. But with the everyone know and negative so that. So after the period of people will make the loose, they will make the rule as a soul. But someone is very genuine. But forced, she is forced. मे भी हो सकते थोड़ा सा टाइट करेंगे तो वो भी छुड़वा सकती है, इसीलिए ऐसा गुरु ऐसे मना किया हो सकता। बट समवन इज वेरी स्टबबोर्न बट प्रिंसिपली आई सी। And then that was like a golden case. You can't miss the opportunity for her to practice and take the progress in Krishna consciousness. You understand? So then that very practical and people session. In the extreme case, she can leave with the consultation of Guru. Yeah. Guru and senior leaders, sadhus, but not in simple things. No. So after the period of brahmacharya, a man accepts a householder's life, and the woman also. Actually, we should that extreme cases are coming because of we are not giving the full, we are not accepting the full mission of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada wanted every temple should have Varnashrama college. Train all the men properly, then automatically problem is solved. If man is properly trained and women automatically follow him. Because man is the leader, not woman is the leader. So main training is needed for the man, not of course women, but mainly to whom it is needed, man. Varnashrama college is only for men only, no for it's not meant for women. Prabhupada says clearly. उनको केवल ज्यादा जरूरत नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन इज because when a girl and boy are united, both are trained for a life. क्या इधर प्रभुपाद जी क्या लिखे बोली, क्या लिखे? In the very man starts from the beginning of his life to become a brahmachari and ideal grihastha and then Vampa sannyasi, and the wife is taught just to follow husband strictly in all conditions. After the period of brahmacharya, man accepts household lives, and women also taught by इसका अर्थ क्या होता है? कौन सा ट्रेनिंग में कहाँ मिल रही ट्रेनिंग? बस इतना ही। इसीलिए ये तो अननेचुरल सिचुएशन, इसमें तो वर्णाश्रम कॉलेज वुमेन्स करके अलग से रखेंगे टेम्पररी, थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए हम लोग रखेंगे, लेकिन बट देयर आर फॉर वुमेन, नो मैन मिक्सिंग देयर, बट आइडियली वर्णाश्रम कॉलेज इज मेंट फॉर men, only for an emergency. That's why nobody is there to train them, because parents also lost their culture. Then you need to have Varnashrama college for women. Okay? Therefore, we are brahmachari caste. No brahmachari, bhai. No, therefore, Prabhupada in the foreign introduced brahmachari caste.
For the time you train. No brahmachari actually. He is a father, mother, everything for them. That's why he kept in temple, and then after that he sent everyone to farm. Made sure that everyone got married, and so they are happily settled in the family's life. Responsibility. Not that no woman is allowed to be Naishtika Brahmachari. Ideal case. In general, exceptions all be there for the everywhere. That's another thing. Because when a girl and boy are united, both are trained for a life dedicated for a higher purpose. The boy is trained to execute his duty in accordance with the higher purpose of life, and the girl is trained to follow him. The chaste wife's duty is to keep her husband pleased in household life in all respects. And when the husband retires from family life, she is to go to the forest and adopt the life of Vanaprastha and Vanavasi. At that time, the wife is to follow her husband and take care of him, just as she took care of him in household life. But when the husband takes the renounced order life, namely sannyas, the wife is to return home and back and become a saintly woman, setting an example for her children and daughter-in-law, and showing them how to live a life of austerity. ये परपुट पड़ गई कुछ ऐसा अभी आजकल वाले कैसे सोचेंगे इतना अन्याय इनजस्टिस चेंज ब्रो परपुट्स ऐसा भी आ रहा है कुछ हाँ is irrelevant to the egalitarian ideology now present. By this kind of purpose, we can't distribute our Bhagavatam books. We can't sell Isa like that. Some people started selling. आप लोगों को बहुत कुछ चीज नहीं पता है अच्छा है कोई बात नहीं वो dependent woman will be so happy and she will definitely get in the what they say oh sannyas only for him and now what about her spiritual life no association nothing so much problem like that people bring so many why she has to follow him why he will not follow her there is the lady in the West. She was so extreme feminist. She cut her own womb, and now she herself wrote a book, Surrendered Wife.com. She opened a website, surrenderedwife.com. And she said that after 30 years of my nonsense last night, I realized I would have been killed and I made a surrendered wife instead of trying to promote it. She opened a website, surrenderedwife.com. हाँ, चुप मुझे गई थी ऐसे लोगों को बहुत लाइव एग्जांपल से के ड्यूटी नहीं ना बाहर का लोग हैं वेरी बड़ी when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas his wife Vishnupriya Devi although only 16 years old also took the vow of austerity due to her husband's living home she chanted her beads and after finishing one round she collected one grain of rice in this way as many rounds as she chanted she आ रहा है क्या चैनल में स्ट्रीम हो रहा है स्ट्रीम हो रहा है क्या वो देखिए
While her husband was sitting in the forest, she followed him eating fruits. किया किया हो रहा है ना अभी रिसेंट कहा है Hmm. Yeah, her husband was in the forest. Prthu Maharaja's wife Arci was steadily determined to execute the duty. So, yeah, woman's main duty is following husband, following father and following husband. If husband takes sannyasa, following son. No other ashrams, nothing. No other varnas also. Why men for men only varnas? Why not for women? We are also equal. We have to get trained. We will become kshatriyas, kshatranis. There is one example. Jansi Bhai is there. Why don't we become? That is exception one or two, but don't generalize that. Yeah, I don't think that all women are good. Some people are ex. That is fine. Even though they live with their children. Since woman's body is considerably more delicate than men's, in Arci became very frail and thin. Parikarshita. When one engages in austerities, his body generally becomes lean and thin. Becoming fat is not very good qualification in spiritual life. My example should not be because a person who engages in spiritual life must reduce the comforts of the body, namely eating, sleeping, and mating, to minimum. Although Kinarchi became very thin from living in the forest according to regulatory principles, she was not unhappy, for she was enjoying the honor of serving her great husband. She again gone to the kingdom and given another protection of the son. After she should never be alone. So soon she had gone back to the We'll see. She may do. देहं विपन्नाखिल चेतनादिकं प्रत्यो पृथिव्यां दयितस्य चात्मना आलक्ष्य च विलक्ष्य च सा सती चितामथारोपयददृश्यः. When Queen Archi saw that her husband, who had been so merciful to her, and the earth no longer showed symptoms of life, she lamented for a little while and then built a fiery pyre on top of him and placed the body of her husband on it. वही बनाई पूरा चिति चिता. After seeing all the life symptoms of her husband stop, the king lamented for a while. The word kinchit means for a little while. The king was completely aware that her husband was not dead, although the symptoms of life, action, intelligence has ceased. And living entity transfers from one body to another, process generally known as death. Maharaj is described here as Daita, but not only was he the king of the earth, but he treated the earth as his protected child. Similarly, he protected his wife also. It was the duty of a king to give protection to everyone, especially to the earth or land which he ruled, as well as the citizens and his family. Since Prthu Maharaj was
So after this, the king executed the necessary funerary functions and offered oblations to oblations of water. After bathing in river, she offered obeisances to various demigods situated in the sky in the different plantations. She then circumvented the fire and while thinking of the lotus feet of her husband, entered in its flames. That is Sahagamana. Madhuri also did actually. Yes. The entrance of chaste wife into flames of a pile of her dead husband is known as Sahagamana, which means dying with her husband. This system of Sahagamana has been practiced in Vedic civilization from time immemorial. Even after the British period of India, this practice was recently observed. But soon it degraded to the point that even when the wife was not strong enough to enter the fire of her dead husband, the relatives would force her to enter. Thus, this practice had to be stopped. But even today, there are still some solitary cases where the wife will voluntarily enter the fire and die with her husband. Even after 1940, we personally knew a chaste wife who died in this way. चेस्टिटी माने ऐसा रहता है आउट ऑफ ऐसा नहीं बोलो दुखी होके उसमें नहीं जाते जो जिसको दुखी है तो उन लोग फोर्स नहीं करते जो वॉलंटरली जाते प्रॉपर लिख रहे हैं वॉलंटरली एंटर द फायर एंड डाई विद हस्बैंड सॉलिटरी वॉलंटरी बिकॉज आउट ऑफ चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस स्त्री का नेचर वैसे ही और ऐसे सेवा करना चाहिए अभी आप उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे कई स्त्रियों को कंट्रोल करने वाला स्त्री बना दे ये कैसे चलेगा हस्बैंड की सेवा करेगी नहीं तुम लोगों की सेवा करेगी हाउ टू थिंक करना व्हाट इज स्त्री धर्म एज पर वर्णन आश्रम प्योर डिवोटी इवन दे आर प्योर डिवोटीज दे शुड follow their varnashma dharma externally nowhere it is said that woman if woman is asked to follow like this can he take up any public role and take the people and guide is it possible for her tell me is it possible no. Then what Prabhupada is teaching to us? Huh? Guru? Guru Babu. Guru Babu क्या है? गुरुनी और गुरु बाबू है विलोक्यानुगतं साध्वी ऋतुं वीरवरपते तुष्टुर्वरदा देवै देवपत्न्य सहस्रशः ऐसा हो गया हमारा प्रभुपाद का मूवमेंट में प्रभुपाद का मिशन के बारे में बोलने से भी वर्णाश्रम इत्यादि काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा है मैंने प्रभुपाद purpose for us is it updated or outdated what do you say you are these are outdated huh? 10,000 years no then whatever the portion of the purport is liking for you that is 10,000 years whatever is not liking that is outdated means it is known as what ardha kukkidiniya after observing this brave act performed by Prabhupada bolte hain all western women should come and learn from the Indian
how they live and happily. Observing this brave act performed by the chaste wife Arci, the wife of the great king Prthu, many thousands of wives of the demigods, along with her husbands, offered prayers to the queen, for they were very much satisfied. सब लोगों जय हो जय हो, क्या ग्लोरियस डेथ है. कुर्वत्यः कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि नादस्वनं तुभ्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम्. At the time of demigods were situated on the top of a Mandara hill, and all their wives began to shower flowers on the funeral pyre and began to talk amongst themselves as follows. देव्यपूचुः अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं बुभुजां पतिं सर्वानापतिं वेचे यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव यज्ञेशं श्रीर्वधूरिव. So the wives of the demigods said, all glories to Queen Arci. We can see that this queen of great King Prthu, the emperor of all the kings of the world, has served her husband with mind, speech, and body exactly as the goddess of fortune serves the personality, supreme personality of Godhead. Ignatia are. In this verse, the words Ignatium, Sharir, Vidhu, Vadhu, indicate Queen Arci served her husband just as the goddess of fortune serves the supreme personality of Godhead. You can observe that even in the history of this world, when Lord Krishna, the Supreme Vishnu, was ruling over Dwarka, Queen Rukmini, who was the chief of all Krishna's queens, used to serve Lord Krishna personally in spite of having many hundreds of maidservants to assist her. Similarly, the goddess of fortune. This place is also followed by the wives of the gods, and indeed, for the wives of men follow the same principle. In Vedic civilization, the husband and wife were not separated by such a man-made laws as divorce. No divorce in Vedic civilization. We should understand the necessity for maintaining family life in human society and should thus abolish this artificial law known as श्रील प्रभुपाद की. अभी ये बात आपको डायरेक्टली किसी क्लास में बोलने के लिए हिम्मत है रखना चाहिए. कांग्रेगेशन क्लास भी लेने वाला हूं मैं इसके बाद. बोलूंगा उधर भी बोलूं तो क्यों नहीं बोलते. Even devotees, many are not accepting. Prabhu, it's too difficult, you know. He's completely hampering my bhakti. I don't want to be with him. ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, ऐसा बदलते रहते. The Supreme Court lawyer said that case the cases are. मोबाइल नहीं दिया इसके लिए भी डाइवर्स होता है. Abolish this artificial law known as divorce. In one case, the husband asked. We should understand the necessity for maintaining family life in human society and should thus abolish this artificial law known as divorce. We should stop this. The husband and wife should. लेकिन इसको करने के पहले, before doing this, what we should do? We should train men next. Without training men, you can't expect this. Yes or no? We should train men properly in the Varnashrama college, then you can expect this to happen. No divorce. Women are exploiting. We have to train women also. Exploiting outside. Outside because we can't. India also. India also exploiting. Who? Women is exploiting men, na? Yeah. Yeah, I'm saying that also. Women is too much exploiting men. Prabhasa says, na,
For divorce, who is the cause? Woman is the cause. Most of the cases. People say that man exploits women, but actually woman exploits men. Really, I searched what is the history, how it started. So actually it started, men used to divorce women, not the opposite. Actually it was used as a tool against women. ठीक है सब ऐसा ठीक है है। तो मान लो बाद में। Okay, so what happened? Are no questions. The husband and wife should live in Krishna. 1 minute नहीं 8:30 तक चलेगा. हाँ तो आएगा आएगा लेट है. 8:20 8:20 ठीक है. और ऐसा आर्टिफिशियल लॉ नोन एज डाइवर्स. अरे कोई क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं कमेंट्स बहुत लेट कर रहे हैं. नैषां नूनं रजत्यूर्ध्वम् अनुवेयं पतिसति पश्यतास्मानतीत्याच पश्यतास्मानतीत्याचि अतीत्याचि दुर्विभावेन कर्मणा दुर्विभावेन कर्मणा. The wives of the demigods continue. Just see how this chaste lady Arci, by dint of her inconceivable pious activities, she is still following her husband upward as far as we can see. She also went where Prthu went. Both Prthu Maharaja's airplane and the airplane carrying Arci were passing out of the vision of the ladies of her higher planetary systems. These ladies were simply astonished to see how Prthu Maharaj and his wife achieved such an exalted position. Although they were the wives of denizens of higher planetary systems, Prthu Maharaj was an inhabitant of inferior planetary system. माने ये तो भूलोकवासी हैं, बोलो तो स्वर्गवासी, बोलो इसे सरप्राइज हो गई तो वैकुंठ चले गए सब. They went upward to Vaikuntha Lokha. Okay, next. Pruthu was a pure devotee and his wife Arci simply followed her husband. Thus, they can both be considered pure devotees. Just इसीलिए वाइफ यदि पति प्योर डिवोटी है तो पत्नी इनको फॉलो करेगी तो वो भी प्योर डिवोटी बस और कुछ नहीं और कुछ जरूरत नहीं. And thus they are capable of performing inconceivable activities. Such activities are not possible for ordinary men. Indeed, ordinary men cannot even take to the devotional service of the God. Nor ordinary women maintain such vows of chastity and follow her their husbands in all respects. A woman doesn't need to attain high qualifications, but if she simply follows the footsteps of her husband, who must be a devotee, then both husband and wife attain liberation and are promoted to the white. Not this point, my Your. A woman doesn't need to attain any high qualifications. Only Amara Prabhupada. But if she simply follows in the footsteps of her husband, who must be a devotee, then both husband and wife attain liberation and are promoted to the Vaikuntha Lokas. This is evinced by the inconceivable activities of Maharaj and Prthu and his wife. इसलिए कोई एजुकेशन गुरुकुल वुमेन गुरुकुल से सब नहीं. वो भी वर्णाश्रम वाले वुमेन आल्सो टेम्पररी ओनली इन दैट because there are no parents to teach her how to be chaste. No questions. Okay. Tesham durapam kim tvanyam martyanam bhagavat padam bhuvi lolayushu ye vai nayashkaram sahayanti. In this material world, every human being has a short span of life, but those who are engaged in devotional service go back to Godhead, or they are actually on the path of liberation. For such a person, there is nothing which is not available. सावंचितो बतात्मत्र पृथ्रेण महता भुवि लब्ध्वा पवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु. Any person who engages himself
within this material world in performing activities that necessitates great struggle and to offer obtaining a human form of life, which is a chance to attain liberation from miseries, undertakes the difficult tasks of fruitive activities must be considered to be cheated and envious of his own self. भक्ति के अतिरिक्त कोई भी प्रोसेस को नहीं लेना चाहिए. मैत्रेय उवाच सुस्तुवस्तिष्ठमरस्त्रीषु पतिलोकं गतावधू यं वा आत्मविदां दुर्यो वैज्ञापापच्युताश्रयाः. The great sage Maitreya continued speaking, my dear Vidura, when the wives of the denizens of heaven were thus talking amongst themselves, Queen Arci reached the planet where her husband Maharaj Prthu, the topmost superior soul, had attained. According to Vedic, a woman who dies with her husband or enters into the fire in which her husband is burning also enters the same planet her husband attains. In this material world, there is a planet known as Patiloka, just as there is a planet known as Pitruloka. But in this verse, the word Patiloka doesn't refer to any planet within this material universe. For Prthu Maharaja, being topmost among its self-realized souls, certainly returned home back to Godhead and attained one of the Vaikuntha planets. When a woman, Prabhasa, in a material world also, when a woman dies with her husband, she again unites with him in the next birth. Similarly, Maharaj Prthu and Queen Arci united in the Vaikuntha planets. In the Vaikuntha planets, there are husbands and wives, but there is no question of they giving birth to children or having sex life. In the Vaikuntha planets, both husband and wives are extraordinarily beautiful and they attracted to one another, but they don't enjoy sex life. Indeed, they consider sex not to be very relishable because both husband and wife are always absorbed in Krishna. According to Bhaktivinoda Thakur also, a husband and wife can turn home into a place of as good as Vaikuntha, even while in this middle world. Being absorbed in Krishna consciousness, even in this world, husband and wife can live in Vaikuntha simply by installing a deity of the Lord within the home and serving the deity according to the directions of the Shastra. In this way, they will never feel the sex urge. So, sex urge से दूर होने के लिए deity worship करना चाहिए. This is one of the way actually. That is the best of advancement in devotional service. One who is advanced in devotional service is never attracted by sex life. And as soon as one becomes attached from sex life and proportionately attached to the service of the Lord, he actually experiences living in the Vaikuntha planets. Ittam bhutanubhavosau prutussa bhagavattama kirtitam tasya charitam buddha Buddhamacharitasya. Maitreya continued. The greatest of all, due to Maharaj Prthu was very powerful and his character was liberal, magnificent, magnanimous. Thus, I have described him to you as far as possible. Yaidam samahut punyam sraddhaya vanitah pate shavaye sunuyadvapi sapruto padadya. Any person who describes the great characters of King Prthu with faith and determination, Phalasruti. अभी ये इतना सुनने के लिए आपको क्या फल मिलेगा ये देखो describes the great characters of King Prthu with faith and determination. Whether he reads or hears of them himself or helps others to hear of them, he is certain to attain the very planet which Maharaj Prthu attained. आप सबको वैकुंठ आ जाएगा. In other words, such a person also return home to the Vaikuntha planet, back to God. मैं भी जाऊंगा. मैं स्टार्ट किया ना पुत्रोपाख्यान 13 से 17 बीच में 3 चैप्टर 4 18 19 20 21 4 नहीं किया मैं 22 23 24 22 24 4 मिस होते हैं इसलिए हम लोग वैकुंठ मैं नहीं जाऊंगा आप लोग जाएंगे आप तो पूरा सुनिए ना
In the execution of devotional service, Shravanam Kirtana Vishnu is a special test. This means that bhakti, our devotional service begins by hearing and chanting about Vishnu. When we speak of Vishnu, we also refer to that which relates to Vishnu. Okay. The Supreme Vaishnava is the spiritual master. And he is not different from the Supreme Personality. ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगति पति वैश्य पतन विपति शूद्र सप्तमामियः. If one hears of the characters of Prthu Maharaja and is a Brahmana, he becomes perfectly qualified with Brahmanical functions. If he is a Kshatriya, he becomes a king of the world. If he is a Vaishya, he becomes a master of other Vaishyas and many animals. And if he is a Shudra, he becomes the topmost devotee. Because his servant attitude is there, na? So that's why he becomes topmost. In Srimad Bhagavad, it is recommended that one should become a devotee regardless of one's condition. Whether one is without desire or with desire or with anyone's desires liberation, he is advised to worship the Supreme God. Maharaj Vaishya proposed. Okay. Trih krutva idamakarnya naro naryayata mukruta apraja saprajatamo nirtano dhanavattama. It doesn't matter whether one is a man or woman. Anyone who, with great respect, hear this narration of Maharaj Prthu will become the father of many children if he is without children. मैंने बच्चों जिसका नहीं प्रतोपाख्यान सुनने से बच्चे हो जाए ब्रह्मचारी के लिए नहीं and will become the richest of the men if he is without money. कौन सी मिल जाएगा बहुत है फलश्रुति ठीक है फिर सिंपल अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्तेन पुंसाम् अमंगलाय निवारणम्. Also one who hears this narration 3 times will become very reputable if he is not recognized in society. And he will become a great scholar if he is literate. In other words, hearing of the narrations of Prthu Maharaj is so auspicious that it drives away all bad. मैं ये प्रुतोपाख्यान 5 बार पढ़ा है ये पिछले साल इधर 2 बार पर 30 to 70 पूरा नहीं है जूहूम उसके बाद बैंगलोर और उसके बाद और एक जगह रिसेंटली पढ़ा है तो 5 बार ये पूरा नहीं है ना आपके तो आगे दो in the material world everyone wants to some profit some abortion and some reputation some adoration and some reputation by associating in definite different ways with the supreme personality of God and his devotee one can very easily become opulent in every respect. ये जो फलश्रुति ये सीरियस है ये अर्थवाद नहीं है पक्का होता है इसको अर्थवाद नहीं समझना चाहिए yes. I'm not angry आपका भी सब बाद 10 मिनट के बाद as far as the education is concerned, so one can become recognized in society as a great learned scholar simply by hearing Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita, wherein the pastors of Lord is devotees are described.
Dhanyam yashasya vishyam swargyam kalidam Dharmadakama samyak siddhima vipsubi Sraddhaya dhanusyakam chaturnam karanam padam. By hearing the narrations of Prthu Maharaja, one can become great, increase his duration of life, gain promotion to the heavenly planets, and counteract the contamination of this age of Kali. In addition, one can promote the causes of release in economic development, sense gratification, and liberation. Therefore, from all sides, it is advisable for a materialistic person who is interested in such a things to read and hear narrations of the life and character of Prithumara. अकाम सर्वकाम मोक्ष काम धारणी कुछ भी चाहिए तो भी कृतोपाख्यान सुनना चाहिए आप बोलिए किसी को भी धन चाहिए बच्चे चाहिए तो सबको बोलिए कृतोपाख्यान सुनने के लिए कोई गलत नहीं है इसमें हमारे जो नियम का अच्छे से पालन नहीं करता है बहुत ही बुरी चीज है अपराध करेंगे तो रिजल्ट तो बाद में आएगा लेकिन तो करेंगे तो अपराध नहीं तो हो जाएगा तो नियम का पालन करना पड़ेगा ना वो भक्त महारानी देखेगी देना ही नहीं देना करते तो करे आप ऑप्शन दे दो आप ऑप्शन दे दो हाँ बस by reading and hearing the narrations of the life of a character of Prthu Maharaja, one naturally becomes a devotee. And as soon as one becomes a devotee, his material desires automatically become fulfilled. Therefore, it is recommended in Srimad Bhagavad, Akama Sarvakama va Moksha Kama Udarani Ivrena Bhakti Yogena Yejeta Putra. इसीलिए कुछ भी चाहे तो भी ये सुनना चाहिए विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वे तदभियज्ञातियान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानो हृदवे यथा. If a king who is desirous of attaining victory and ruling power chants the narrations of Prthu Maharaj 3 times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him, and they render unto him, and they render them unto Maharaj Prthu simply upon his order. माने राजा भी जीत लेंगे शत्रुओं. Sri Kshatriya king naturally desires to rule the world. He wishes to make all other kings subordinate to him. This was also positioned many years ago when Prthu Maharaj was ruling over them. At that time, he was the only emperor on that time. Even 5,000 years ago, Maharaj Yudhishthira and Maharaj Parikshit were sole emperors on the planet. Next, Muktanya Sango Bhagavatya Amalam Bhakti Mudvahan Vainyasya Charitam Punyam Shruya Srahayate. A pure devotee who is executing the different process of devotional service may be situated in the transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness, but even he, while discharging devotional service, must hear, read, and induce others to hear about the character and life of Prthu Maharaja. There is a type of neophyte devotee who is very anxious to hear about the pastimes of the Lord, especially the Rasalila chapters in Srimad Bhagavatam. Such a devotee should know by this instruction that the pastimes of Prthu Maharaj are not different from the pastimes of Supreme Personality of Godhead. An ideal king, Prthu Maharaj, exhibited all talents in showing how to rule the citizens, how to educate them, how to develop the state economically, how to defeat enemies, how to perform great sacrifices. Thus, it is recommended for the Sahaja or neophyte devotee to hear, chant, and get others to hear about the activities of Prthu Maharaj, even though one may think himself to be in the transcendental position of the advanced devotional service. Vaichitramiryavihitam mahan mahatmya suchakam asmin krutamati matyam Pardhavim Gatimapuya. There's a great Maitreya continuum. My dear Vidura, I have as far as possible spoken the narrations about Prthu Maharaj, which enlists everyone's devotional attitude. Whoever takes advantage of these benefits also goes back home back to Godhead, like Maharaj Prthu.
So, Shavayit, meaning making others to hear it, read, but should also induce others to read and hear. That is called preaching. Chaitanya Mahaprabhu recommended this practice. Yare dekhe tare kaha Krishna Upadesh. Whomever we meet, we should simply talk about Krishna. Uttama's history and devotional service is potent and has narrations about the activities of Supreme Personal of God. One should not make distinctions between the pastimes of the Lord and the activities of Prthu Maharaja. And whenever it is possible, a devotee should attempt to induce others to hear about Prthu Maharaj. One should not only, especially Prthu Maharaj's pure devotion and doing the, so still his karma and no avratam of his bhakti, these kind of things are very crucial for this whole episode, especially this chapter, yes, 22nd chapter. अनुदितमिदमादरेण शृण्वन् ऋतुचरितं प्रतयन् विमुक्तसङ्गा भगवती भवसिन्धुपोतपादे स च निर्गुणान् लभते रतिर्मनुष्य. Whoever with great reverence and adoration regularly reads, chants, and describes the history of Maharaj Prthu's activities will certainly increase unflinching faith and attraction for the lotus feet of the Lord. The lords of lotus feet are the boat by which one can cross the ocean of his science. I think this is the only major. इतना ज्यादा फलश्रुति इसी का उपाख्यान है, इतना तो कहीं नहीं रहता है. Bhavasindhu Potapade is significant in this. The lotus feet of the Lord are known as Mahat Padam. So this means that total source of material existence rests. An important point. So one who has taken shelter of lotus feet of the Lord did not cross over the ocean, for he has already crossed it by virtue of his position. The Lord. By hearing chanting glories of the Lord, our Lord's devotee, one can become firmly fixed in service of the lotus feet. This is the position also achieved very easily by narrating the history of the life of Prthu Maharaj regularly every day. If you do that, you will be getting the strong faith. That means for devotees, what happens also is explained here. Devotees can get the very strong faith by regularly hearing this. Unflinching faith. दृढ़ श्रद्धा के लिए काम करती है. The end of Bhakti and the purpose of the 4th and 20th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Maharaj Prthu's Going Back Home. 24. Chanting the songs sung by Lord Shiva. Maitreya Vacha. Vijitasu Rajatsi Prthu Putra Prthushava Yavipyo Dadatkasta Pratrubhyo Vatrupatsalah. The great sage Maitreya continued. Chitasva, the eldest son, who had reputation like his father's, became emperor and gave his younger brothers different directions of the world. How many brothers are there? 4. He was given the affectionate towards his brothers. Haryakshadishat prachi Dhrumakeshaya dakshina prachi pratichi Rukasangyaya turyam dravina sejugu. Maharaj Vijdas offered the eastern part of the world to the brother Haryaksha, southern to the Dhumrakesha, western to the Bruka, northern to the Dravida. Antardhana katim suklat labdantardhana sangitaha apatyar yatra madadatta sekandinyam susammatam. Formerly Maharaj Vijitasra pleased the king of heaven, Indra, and from him received the title Antardhana. His wife's name was Sikandivi, and by her he begot 3 good sons. Actually, when finding that when Antardhana, Vijitaswa holding the Indra. So at that time, Indra was pleased by Vijitaswa and he gave Antardhana, that means disappearing. Maharaj Vijitaswa, known as Antardhana, which means disappearance. He received this title from Indra, and it refers to the time when Indra stole Maharaj Prthu's horse from the sacrificial. Indra was not visible to others when he was stealing the horse. But Maharaj Prthu Vijitaswa could
see him. And despite his knowing that Indra was taking away his father's house, these other didn't attack him. This indicates that Maharaja Vizdasa respected the right persons. Although Indra was stealing the horse from his father, Vizdasa knew perfectly well and that Indra was not ordinary thief. Since Indra was a great and powerful demigod and servant of the personal government, Vizdasa purposefully accused him due to sentiment only, even though Indra was acting wrongly. Thus, Indra became very pleased with Vizdasa at that time. The demigods have the great mystic power of being able to appear and disappear according to their will. So, and since Indra was very pleased with Vizdasa, he bestowed this mystic power upon him. ये story है. इसलिए उसका नाम विश्वास में अंतर्धान. पावकः पवमानश्च सुचिरत्यग्न पुरा वशिष्ठापादा पद्मा पुनर्योगगतिं गता. Three sons. So from Shikhandi. Three sons of Maharaj Antardana. Antardana means Vidyasa. Her name Pavaka, Pavamana and Suchi. Formerly, these three personalities were the demigods of fire, but due to the curse of great sage Vasishtha, they became the sons of Maharaj Antardana. As such, they were as powerful as fire gods and they attained the destination of so mystic yoga power, being again situated as the demigods of fire. Antardhanabhasvatyam havirganamaviddata yaindramasmhartaram vidvanapi najatva. Maharaj Antardhana had another wife named Nabaswati, and by her he was happy to beget another son named Havirgana. Since Maharaj Antardhana was very liberal, he didn't kill Indra while the demigod was stealing his father's horse at the sacrifice. Okay, इधर तक रखेंगे. और भी 10 पहुंचना था मेरा, लेकिन चलो छोड़ दे. कल कितने बजे से? कल कम से कम 3 घंटा चाहिए तो ऐसा एडजस्ट करिए. 3 घंटा. कितने? 4 घंटे है क्या? 2 से 5 2 से 6 का सुबह 10 से 12 मिनट उसके बाद 2 से 6 तो बहुत अच्छा है. कितना बोली मेजर चैप्टर तो हो गए. मेजर चैप्टर 22 में थोड़ा सा ऊपर का बस हो गया बस. अभी 24 में केवल ऐसा स्तुति में कुछ कुछ वर्ड्स आता है, उसका मीनिंग्स एक्सप्लेन करते जाते. लेकिन बहुत श्लोक है, लगभग 79 है, तो आप 5 हो गया तो 74 है. मैंने ज्यादा डिस्कशन वाला श्लोक नहीं है, केवल पृथु महाराज का नहीं था. पर्पस भी बहुत ज्यादा है. ठीक है. हाँ, कल का क्या है शेड्यूल? 3 सुबह आप लोग ग्लोरिफिकेशन में जाएंगे क्या? अभिषेक तो तब अभिषेक में छोड़ देंगे ना. सुबह तो खाएंगे नहीं तो सुबह आ जाएंगे. दूर से आने के लिए 2 शिफ्ट में रखो. जाएंगे अभिषेक करेंगे. फ्लावर अभिषेक है ना, फ्लावर अभिषेक ही करेंगे. ओरिजिनल ना प्रॉपर मूर्ति है क्या आप लोगों के पास? हाँ अच्छा, आल्टर में है ना, गौरव था. तो कितना 1.5 घंटा चलेगा. और शाम को 2:30 से 2:30 to 5. हाँ 5:30 भी चलेगा. 2:30 to 5:30 और ये 1.5. ठीक है 2:30 to 5. ओके.
टू 5 ठीक है चलेगा। तो 2:35 और 9:32 4 hours। प्रभु मुझे मैसेज भेज प्रभु जी 9:32 11